So in physics, the next chapter is work and energy and also power. Okay, so in this chapter, we will study about work, we will study about energy, we will see how work and energy are related, but they are not exactly the same thing. Then we will see the conservation of mechanical energy, which says that the total mechanical energy, which is the potential plus kinetic energy, is a constant under certain circumstances. So conservation of energy. Then we will study the work energy theorem, which relates the relationship between work and kinetic energy. And then we will discuss what is power. And from these 5 topics, we will see what kind of problems come in the exam. Okay, so let us start with work. तो वर्क क्या होता है? What is work? Work is the product of force along the direction of displacement. So product of force and displacement along the same direction. So if force is acting in this direction and work is and displacement is happening along the horizontal, then force will be given by the dot product of these two vectors. Sorry, work then will be given by the dot product of these two vectors. And since the dot product is a scalar quantity, therefore work done is also a scalar quantity. So in terms of the magnitudes, work done is equal to F times T times cos theta. So suppose we are pushing against a wall, but the wall is not moving. So what will be the work done? If the displacement itself is 0, then the work done is 0. Okay. And suppose the block of mass m is moving in the horizontal direction with speed v. What is the work done by the gravitational force? So the gravitational force is acting in the downward direction, and since the displacement is happening horizontally, the angle between the force and the displacement is 90 degrees. So cos of theta will be 0 if theta is 90 degrees. The work done by the normal force will also be 0. Okay. So these two things you need to know, that if the force is 0 or the displacement is 0 or the angle between the force and displacement is 90 degrees, in all the 3 cases work done is equal to 0. Then the next topic is energy. Energy is nothing but it is the capacity to do work. Okay. So if someone asks you whether energy is the same as work, the answer will be no. The relationship between energy and work is that energy is the capacity to do work. So if you have a greater amount of energy stored within a system, that means the system has a greater capacity to do work. For example, if this is the ground and a ball of mass m is present at a height capital H, whereas another ball of mass capital M is present at a smaller height h. If the two balls are of the same masses, then we will say the second ball has a lesser energy, while the first ball has a greater energy because the first ball has a greater capacity to do work. So if we just release the ball, then as it comes to the bottommost position, it will have done a greater amount of work than the second ball. So if an object has a greater energy, it can do more work. Okay. Then there can be different types of energies. The most common form of energy is the kinetic energy, which is equal to half mv square. If a body has a greater velocity, then it has a greater kinetic energy. Then the other form is potential energy. So potential energy can be of various types. One is the gravitational potential energy, which is the energy because of the virtue of its height. And the second form of potential energy is the
elastic potential energy or the spring potential energy. So gravitational potential energy is equal to mgh, and therefore if the height is more, then the gravitational potential energy is more, and the elastic potential energy is equal to 1 half k delta x square. So if you compress a spring or if you expand the spring, then it will have a positive elastic potential energy. Now you have to be careful that kinetic energy is always absolute. So suppose a car is going with the speed of 10 meter per second, then even if you are sitting at the bottom of a building or if you are sitting at the top of the building, you will see the same kinetic energy, because velocity, absolute velocity, will not depend on the frame of reference if the frame of reference is static. But for the potential energy, if you change your reference level, then your potential energy will also change. Similarly, for the spring also, if you change your equilibrium position, then your elastic potential energy will change. Okay. Then there can be many other forms of energies like sound energy, light energy, chemical energy, and there can be many other forms, but mostly we will be dealing with kinetic energy and potential energy only. Okay. Then there is a term which is known as the mechanical energy. Mechanical energy is nothing but the sum of kinetic energy plus the potential energy. And the conservation of mechanical energy theorem says that if in a system there are no external forces, then the mechanical energy is always conserved. So, for example, let us say we are dropping a ball from the top of a building which has a height capital H. Let's say initially the ball is at the topmost point and its velocity is 0. The ball is allowed to fall down freely onto the bottom of the surface. So in between, it will reach the midpoint of the building with some velocity VB. And then it will strike the floor of the building. And just before striking the floor, it will have some velocity VC. Okay. So conservation of mechanical energy says that the mechanical energy at point A, B, and C and all other points in between will remain the same. Okay. So if we calculate the mechanical energy at point A, it is equal to 0 kinetic energy plus mg capital H potential energy. If we calculate the mechanical energy at B, it has some kinetic energy, so half mvb square and plus some potential energy. And if we calculate the mechanical energy at C, it will only be equal to the kinetic energy because the potential energy is now 0. The conservation of mechanical energy theorem says that all these three values will give you the same answer. So if you use the conservation of mechanical energy theorem, you can, by comparing the energy at A and C, you can say that velocity at C will be equal to square root of 2gh. And similarly, you can say that velocity at B will be equal to square root of gh. Okay. Then let's go to the next concept, which is the work energy theorem. Okay, so work energy theorem says that the change in kinetic energy of a body is equal to the work done by all the forces. Okay. So I'm not dictating the definition because it can be found in books, but let us explain the concept. Let us say this is our frame of reference which has a mass m,
and it is being acted by a set of forces F1, F2, F3, F4, and all the forces are acting in different directions. Let us say by the application of all these forces, the position of the block changes, and let this be the new position where this displacement is given by small d. Okay. So let us say the initial velocity was v initial and the final velocity was v final. So the work energy theorem says that change in kinetic energy, which is 1 half mvf square minus vi square, this will be equal to the work done by all the forces. So all the forces is the important term. You will not consider any single force while calculating the work done, but you will calculate the work done by all the forces. So in this example, the work done by forces F1 and F3 will be 0 because they are perpendicular to the displacement. Work done by F4 will be positive, so F4 times D, and work done by F2 will be negative. So if this angle is theta, what will be work done by the force F2? So F2 d sine theta with a negative sign. Okay. So work energy theorem says that change in kinetic energy will be equal to the work done by all the forces. So this will be the final equation of the work energy theorem. ओके, तो अब एक एग्जांपल करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का. Let's say this is a pulley and a block of mass small m is equal to 1 kg is hanging on one edge of the pulley. Initially, the block is at rest and some person applies an external force of 10 newtons onto this other end of the pulley in the downward direction. Because of this, the block of mass m will start moving upwards. Okay. So you have to find the velocity of the block of mass m when it has moved up by a distance of 20 centimeters. Find the velocity of mass m when it has moved up by a distance of 20 centimeters. इस क्वेश्चन में कुछ अजीब लग रहा है क्या? So what will be the tension in the force in the pulley? टेंशन कितना होगा? जितना ये फोर्स लगा रहे हैं उतना ही टेंशन होगा, राइट? बिकॉज इस एंड पर कोई मास नहीं है. सो दिस एंड इज मासलेस.
So when there is a massless object, let's say this is the massless object, that means all the forces on this object should be balanced. So जितना फोर्स नीचे लगेगा एफ एक्सटर्नल, उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स. सो इस केस में जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही टेंशन होगा रोप का. तो अगर टेंशन फोर्स 10 न्यूटन्स है तो कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? नीचे की तरफ फोर्स लगाने का मतलब है कि इस तरफ ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगा. ठीक है, और उस फोर्स की वैल्यू होगी 10 न्यूटन्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स भी 10 न्यूटन्स है. तो इसीलिए ये मूव ही नहीं करेगा. तो हमें एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाकर 20 न्यूटन्स करना पड़ेगा अगर हमें ब्लॉक को मूव करना है. तो अब टेंशन फोर्स भी 20 न्यूटन्स हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? Acceleration will be 10 meter per second square upwards. So V square will be equal to 0 square plus 2 times 10 times 0.2, which is equal to 4. Therefore, velocity will be equal to 2 meters per second. But ये तो हमने काइनेमैटिक्स से सॉल्व करा. नाउ लेट अस सॉल्व दिस यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? दैट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m फाइनल v स्क्वायर माइनस 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पे? सो टेंशन फोर्स का वर्क डन होगा 20 टाइम्स 0.2 और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा -10 टाइम्स 0.2. सो इससे भी हमारा फाइनल वेलोसिटी सेम आना चाहिए. आ रहा है क्या सेम आंसर? Hence we have verified the work energy theorem. बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो वर्क डन में सिर्फ एक ही फोर्स का वर्क डन कंसिडर करते हैं. जैसे कि टेंशन फोर्स का वर्क डन ले लिया, ग्रेविटेशनल का भूल गए. तो उस केस में यू गेट द रॉन्ग आंसर. So work energy theorem में you have to take the work done by all the forces combined. Okay. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं. Next is power. Power is the rate of energy dissipation. Okay. So either power can be written as the work done per unit time, or the power can also be written as the change in energy per unit time. Since work done is equal to energy, therefore both the definitions are correct. Okay. Now work done was equal to F dot D. Okay. So if we take the rate of change of work done with time, that means power will come out to be F dot V vector. Because force is a constant, and when you take the derivative with respect to time, displacement का derivative velocity बन जाता है. So this can also be written as FV cos theta.
where theta is the angle between force and displacement or the force and velocity. तो अगेन हम देखेंगे अगर फोर्स इस तरफ है और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो पावर डिसिपेशन इस ऑब्जेक्ट का होगा F टाइम्स V टाइम्स कॉस ऑफ थीटा. ओके, तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं. Let's say this is a block of mass m is equal to 10 kilograms and it is moving to the right with velocity 40 meter per second. What will be the power dissipated by the gravitational force and the normal force? So इसमें भी अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो पावर डिसिपेशन जीरो होगा. Now let us change the direction of velocity. Let us consider an inclined plane with the angle of inclined being 30 degrees. And now the block of mass 10 kilograms is lying like this. Now what will be the power dissipated by the gravitational and the normal force if the block is sliding down with velocity 10 meters per second? Find the power dissipated by gravitational force and the normal force. ओके, सो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है एंड मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फोर्स का 100 न्यूटन्स. So what is the angle between force and the velocity is equal to this angle. What is this angle equal to? So therefore power of the gravitational force will be equal to F times V times cos of theta or cos of 60 degrees. तो फाइनल आंसर होना चाहिए 100 टाइम्स 10 टाइम्स cos of 60 होता है 0.5 which is equal to 500 watts. पावर भी बहुत इजी टॉपिक है, सीधा फॉर्मूला स्ट्रेट अवे अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो एक टॉपिक इसमें बचा था वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. So conservative forces are those forces in which the work done depends only on the initial and the final points but not on the path in between them. तो फॉर एग्जाम्पल हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी and we take a mass m from point A to point B along this straight route. Let's say the height difference between points A and point B is h. So what will be the work done by the gravitational force in taking the ball from A to B along this route? Right? अब सपोज करो कि हम इस रूट के बजाय इस बॉल को हम कहीं ऐसे किसी रैंडम रूट से ले जाते हैं. उस केस में व्हाट विल बी द वर्क देन? सो ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी रूट से ले जाओ, वर्क डन विल ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. Such forces where work done is independent of the path taken are known as conservative forces. And example is gravity. One more example is the electrostatic force.
जो K Q1 Q2/r² होता है, उसमें भी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड करेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड एक और फोर्स है जो कंजर्वेटिव है, वो है स्प्रिंग फोर्स। सो स्प्रिंग फोर्स होता है नेगेटिव kx, जो हुक्स लॉ से आता है, एंड उसमें भी अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो हाफ k डेल्टा एक्स स्क्वायर आएगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ हम कैसे उसे कंप्रेस करते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 इफ द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। नाउ सपोज हम इसको कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेशन का लेंथ है x। सो इस केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/2 k x square. So what will be the work done by the force required to compress the spring? Work done will be equal to the change in energy, which is half kx square. Okay, so इस केस में work done is half kx square. Okay, so does this depend कि हम इसको झटके से कंप्रेस करते हैं या फिर हम इसे आराम आराम से कंप्रेस करते हैं? दोनों केसेस में वर्क डन तो सेम ही रहेगा, राइट? तो इसमें भी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। ओके, एक और पॉइंट था, कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां भी होंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव है तो वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी which is equal to mgh. Spring force conservative है, so we have spring potential energy which is half kx square. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2/r। तो ये भी आसान तरीका है याद करने का, जिसका भी पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स को देखो, तो हमने कभी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है क्या? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन में वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। सो फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स से दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m and the frictional force acting on the base is equal to F is equal to 10 newtons and the force applied to the right is 20 newtons. So इसमें नेट फोर्स 10 टुवर्ड्स द राइट होगा। तो अगर मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम तो इसका एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द राइट। नाउ सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इज 1 मीटर आफ्टर सम टाइम। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा -10 जूल्स। सपोज हम इसे ग्राउंड पे ड्रैग करने की बजाय हम इसको थोड़ा सा हवा में लिफ्ट करके इसी पोजीशन पर ले आए, बट इस केस में क्योंकि हमने हवा में लिफ्ट करा था तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नेग्लिजिबल होगा। तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन 0 हो जाएगा। So even if the initial and final position are same along the two paths, work done is different. So work done in case of a friction depends on what path you have taken. So friction is an example of a non-conservative force. Similarly, air resistance is also a non-conservative force. जहाँ पे भी dissipation हो रहा है energy का, those forces are generally non-conservative.
yes, and wherever there is a conservative force, वहां पर there will be a potential and a potential energy. And if we say the potential energy associated with the conservative force is given by capital U, then we can calculate the magnitude of the conservative force by using the equation F is equal to negative du by dx. So potential energy का डेरिवेटिव लेके नेगेटिव साइन लगा के we can get the magnitude of force. For example, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mg(x), अगर x को हम हाइट माने तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव mg. तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो u कितना होगा? सो व्हाट विल बी द स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू? ये भी हमने पढ़ा है हुक्स लॉ में, द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव kx. इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r की जगह हम x लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा? k q1 q2 बाय x स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन. So this is the electrostatic force, this is the electrostatic potential energy. नेगेटिव इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है. जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. और एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हम ग्रेविटी को देखें, अगर जी कैपिटल जी के फॉर्म में देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज g(m1m2 by x) एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा नेगेटिव g(m1m2 by x स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटी एकदम सिमिलर हैं, बस k की जगह कैपिटल G आ जाता है, q1 q2 की जगह m1 m2 आ जाता है. बाकी सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़े वो ग्रेविटेशनल में भी अप्लाई कर सकते हैं. और एक और चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि charges can be both positive and negative, but mass is always positive. Okay, so force is equal to negative du by dx. Similarly, अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाके इंटीग्रेट कर दें, so we can say the integral of force with the displacement, let's say from xa to xb, is equal to negative integral of du from u initial to u final. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? दिस लेफ्ट हैंड साइड इज द वर्क डन एंड राइट हैंड साइड इज द negative of change in potential energy. Okay. And can we say the negative of change in potential energy is equal to plus change in kinetic energy? तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी हमेशा सेम होता है. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. तो जितने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतने से ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. सो दिस इज आल्सो इक्वल टू प्लस चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिराइव कर लिया है, दैट
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जीज। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।